Hello friends, Namaskar doston, very warm welcome, very good morning also. Today is 23rd of August 2024. आज है Friday, week का last day. Week का last day बहुत important होता है because we get the weekly closing. बहुत सारे stocks could be a good opportunity in terms of weekly closing. Different, not just about stocks, it's about different commodities, currencies, all this. So weekly it's a coming close, daily close is important. So now we are on a Friday और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी को। बट ये फ्राइडे क्लोजिंग के बारे में एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आप लोग जानते ही हैं मैं अपना फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का इस्तेमाल करता हूँ। सो इन दिस सेटअप नाम जैसे भी थोड़ा अलग लगे बट लार्जली इट इज सेम, द एचडी रेनबो वेव वर्जन 1. So this is the buy support opportunity on a weekly basis. If there is no major significant spike, you can see there is no major significant spike is out there. जैसा मैंने बोला कि weekly is important. So this is what this trade is. That after correction, I had a full green candle with price action as bullish. It's full green candle. Only thing pending is the short-term momentum. So once the short-term momentum comes in favor by agar Friday's close, this will be a good buy support opportunity. So similarly, this is just one. अगर आज नहीं हुआ तो हो सके आने वाले दिन में there could be a new breakout. So I'm aware different तरीके से. So 750 के ऊपर आज क्लोज कर पा रहा है. That's quite good. ये जो मेन रेनबो का ब्रेकआउट लेवल है उसको ही ये टेस्ट कर रहा है, which is 749, 750 ये रीजन. Once इसका ब्रेकआउट हो जाए, another round of gain we can start seeing in CG Power. Now let's go to the Nifty. Lot of alerts आता रहता है. I trade based on alerts and others. This is short trend bullish. You can see Philatex का it's a good base formation. Important base level के पास it is here, but ये उतना flat line है नहीं. I need a straight line. Some portion of it is carved. So एक बार line chart को देखेंगे how it is forming. Yeah, it is another good counter. Probably we'll be testing out very soon this 70 area. So another 10% gain from here is very much possible. Currently, we will not like any stop below the 59 level. So 4 रुपए का approximately stop loss है, which is I think around 7%. 7% के around is a stop loss. So first area of target would be 70. That is a 10% up. And after that there could be an open-ended move. So this is an opportunity, but the base is not that strong. So any position will prefer to have with smaller scale. So as alerts आते हैं, we might get diverted. This is live market discussion और live market में हम लोग आ चुके हैं daily chart में. Daily chart में what is Nifty doing? Nifty has gone bullish broadly. पर तब से वही मेंटेन कर रहा है. मोमेंटम मार्जिनली फेडिश होते हुए दिख रहा है, बट ओवरऑल स्टिल बुलिश पिक्चर. बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 75% चांस की बाई ट्रेड जीतेगा. सेल का तो 7% चांस है. कंसोलिडेशन होने का चांस थोड़ा बड़ा है, 29%. सो वैल्यू अभी निफ्टी ज्यादा मूव नहीं कर रहा है. लेट मी चेंज द वैल्यू एट रिस्क टू 5. it is 5. So over the next 5 days, there is a good chance, 95% probability that my loss will be contained within a 0.3. But let's consider 0.5% loss. But this is a statistical measure based on recent past performance. Recent past performance में volatility low रहा है, so that is obviously taking into account. Now निफ्टी का 125 मिनट्स का चार्ट भी हम लोग देखेंगे. दैट इज मोर शॉर्ट टर्म स्विंग का चार्ट. शॉर्ट टर्म स्विंग चार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या दिख रहा है. सो इट हैज बीन बुलिश रहा है निफ्टी. आप लोग देख ही सकते हैं. दिस इज सिंस दिस डे
16th of August, it has for the past 7 days, gradually it has been going up. A marginal exit which was at a very important level, this was 24,600 flat line, तो इसके आसपास correction is natural. अब ये ऊपर गया है and the next major level is the coming up 25k. 25k is a very important psychological level, so it may not break very easily. So as it goes up, you may further see consolidation at this point. देखिए बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी डेली में तो ज्यादा है, बट इस फेज में वहां 68% चांस बायर्स का जीतने का. सो दिस इज, और साथ में आज करेक्शन भी चल रहा है पिछले 2 दिन, मतलब 2 कैंडल से. सो ये कैंडल का जो क्लोज हुआ था, मतलब कल एक करेक्शन दिखाया था, आज भी माइनर रेड कैप, सो छोटा करेक्शन है. सो ये जो निफ्टी का मोमेंटम जो फ्लैट है वो बहुत ही नेचुरल. सो दिस इज मोर ऑफ अ, अगर जो होगा कंसोलिडेशन, मतलब क्या कंसोलिडेशन, मतलब बेस बिल्डिंग. ये जो 25k, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस. चलिए स्टॉकेज में चलते हैं. Stockage is a wonderful app. I hope you know that. I very much love their app. Though I prefer, I mean, I look at more international apps, but whenever I'm looking at India, I'm looking at Stockage app. So in Nifty 50 को हम लोग देख रहे हैं, and Nifty 50 में if you go to the option chain and take a look at the open interest level, you get some fair idea about important support and resistance level where activity is more. That's a general you can consider. मतलब let हम लोग, जैसा मैंने बोला, any of my teachings will not get into too much of jargons of this. Open interest मतलब कितना एक्टिविटी हो रहा है मान सकते हैं. जो लोग बिगिनर्स है, यू कैन थिंक व्हाट्स एक्टिविटी, और जो लोग जानते हैं, यू नो ओपन इंटरेस्ट, दैट्स द मोमेंट यू नो यू आर टेकिंग मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, यू आर सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स. सो इट इज the number of contracts that remains open unsettled and will be settled at the expiry has gone up. So it is writing चल रहा है. तो हम लोग एक्टिविटी, जो लोग बिगिनर्स है, आप मान सकते हैं एक्टिविटी. तो एक्टिविटी कहाँ ज्यादा है? 25,000. जहां एक्टिविटी ज्यादा है, मान सकते हैं दैट विल एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर अ बेसिक नॉलेज. सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे है? 25,000. इधर भी एक्टिविटी है, यहाँ पे भी एक्टिविटी है. सो लॉट ऑफ एक्ट साथ में, और सपोर्ट नीचे कहां पे? देखिए 24,800, 700. तो हर 100 के ऊपर काइंड ऑफ इक्वल वेटेड सपोर्ट 24,500 और सम सपोर्ट. अब जाके ये चार्ट में आइए, अब देखिए कहां पे आपका मैक्स स्टॉप लॉस है. मैक्स स्टॉप लॉस है 620 फार अवे. मैक्स स्टॉप लॉस को देख के डरिएगा मत. अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए मैक्स स्टॉप लॉस कितना बड़ा है. जैसे ही रिवर्सल का रिस्क बढ़ा, इमीडिएटली मैक्स स्टॉप लॉस विच इज कैंडल का टॉप छोटा हो गया इमीडिएट. तो कोई भी रिस्क आने का चांस हुआ रिवर्सल का, तो ये छोटा हो जाएगा. सो द करंटली 600, 700, अगर मिनिमम स्टॉप लॉस देखिए 780 के पास आ रहा है, 800. ये जो कैंडल का टॉप, दिस विल एक्ट एज एरियाज जहां पे सपोर्ट. 125 मिनट का ये जो कैंडल दिख रहा है, इसमें रेड कैप्स चला जा रहा है एंड शॉर्ट टर्म मोमेंटम इज बुलिश. तो बहुत ही फ्लैट करेक्शन चल रहा है. आई विल कंसिडर दिस कि ये जो है, ये बेसिकली मोर ऑफ एक बेस बिल्डिंग चलेगा. एक 25,000 का ब्रेक चाहिए, तो बड़ा ब्रेक है वो. और आपके पास विद द रेनबो स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया है, नाउ यू हैव दिस. तो यही है एक्चुअली स्ट्रैंगल, तो यही दिख रहा है 25,000 और 24,500 जो लोग ऑप्शन करेंगे. बट दिस इज एनीवे एन इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे. और ये माउंटेन टॉप भी अब लेवल बन जाएगा, दैट इज 580. और ऊपर और भी ऊपर लेवल है, दैट इज मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, मिन स्टॉप का लेवल है. सो ऑल दीज लेवल्स आर इंपॉर्टेंट. अभी भी आई थिंक ग्रेजुअल मूव, मतलब निफ्टी के अंदर रोटेशन चल रहा है. सो लेट्स लुक एट कि निफ्टी का अंदर का रोटेशन इन अ बिट मोर डिटेल. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? विल गो टू हम लोग को जाना होगा, लेट्स गो हियर, होम. होम होम में जाना होगा. वी हैव टू गो टू प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स के अंडर यू हैव टू गो टू हीट मैप्स.
हीट मैप्स के अंडर स्टॉक्स, बिकॉज हम लोग स्टॉक्स को देखेंगे. दिस इज अ फीचर ऑफ ट्रेडिंग व्यू. नेक्स्ट हम लोग निफ्टी 500 इंडेक्स. क्यों 500? बिकॉज 500 इज अ बेटर मेजर फॉर स्टॉक. वही दिख रहा है, देखिए मेजोरिटी स्टॉक कुछ नहीं किया, इट्स इन अ फ्लैट. आज एकदम मूड फ्लैट है, एकदम फ्लैटिश मूड है आज, एकदम रेंजिश मूड है. एंड उसके अंदर जो लोग हम लोग जीरो को हटा देंगे, जो लोग सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, जहां पे वोलेटिलिटी दिख रहा है, तो वोलेटिलिटी कौन कंट्रोल कर रहा है? मेजोरिटी. मेजोरिटी दिख ही रहा है, वोलेटिलिटी कंट्रोल कर रहा है इज बुल्स. बियरिश स्टॉक्स आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर मैं बड़ा कर दूं तो कितना कम है, इट्स नॉट दैट मच. So let's go to now 2% group. 2% group में कौन भारी है देखते हैं. उसमें भी देखिए it's kind of a mix. 2% में more sellers अभी हो रहे हैं धीरे धीरे, buyers अभी भी ज्यादा है, but kind of a equal fight की तरफ जा रहा है in 2%. Now let's go in such situation. We need to go to look at see the 1%. 1%. This is something interesting. This is a rotation चल रहा है बहुत सारा स्टॉक्स में से. फ्यू स्टॉक्स में मे बी करेक्शन इज कमिंग अप. करेक्शन के लिए तैयारी चल रहा है, अंदर ही अंदर करेक्शन हो रहा है, लिटिल टर्न अराउंड चल रहा है. सो यू हैव टू टेक अ नोट विच ऑफ योर स्टॉक्स आर लूजिंग मोमेंटम. दैट इज नॉट अ स्टॉक टू होल्ड राइट नाउ. यू हैव टू रिड्यूस रिस्क. बेस्ट यू, आप मेरा सुन के मत ट्रेड कीजिए, दैट इज माय रिकमेंडेशन. आप जो चाहे आपको लगे वही ठीक, वही कीजिए. किसी का सुन के ट्रेड करना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता. बट मैं क्या करूंगा, आई डेफिनेटली, दिस इज रोटेशन. रोटेशन बैड रोटेशन. सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं 1% और धीरे धीरे हावी हो रहे हैं 2%. एंड जो अच्छा स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स इन अ गुड मोड ओनली या गुड फेज ओनली, दे आर द ओनली वंस देयर आर व्हिच आर सिग्निफिकेंटली गोइंग अप. तो 3% हायर ग्रुप में दीज आर स्ट्रॉन्ग, these are significantly strong. अदरवाइज बाकी जो नीचे का मेजर क्वाड्रेंट्स में मुझे रोटेशन दिख रहा है लिटिल अवे फ्रॉम द बुल्स, थोड़ा बुलिश से अवे दिख रहा है. हम लोग स्टॉकेज का ऐप जो है, स्टॉकेज का ऐप में अगर मार्केट होम पे जाएंगे, दिस इज मार्केट का डिटेल्स. इन ऐप में थोड़ा चेंजेस हुआ है. निफ्टी 50 इंडेक्स का ब्रेड, थोड़ा इंडेक्स का ब्रेड देख रहे थे. सो इंडेक्स का ब्रेड में देखिए काफी सारा स्टॉक्स अगर देखा जाए RS50 के नीचे है. एंड ओवर द लास्ट फ्यू डेज की स्टॉक्स में करेक्शन के बाद, यू नो, सी फ्रॉम हियर 16th अगस्त 17th अगस्त ऑनवर्ड्स, जहां से एक्चुअली रिकवरी चालू है, फ्रॉम देयर more and more stocks became stronger, which is a good sign. बट अभी थोड़ा ऑपोजिट साइन दिख रहा है. ये तो डेटा पीछे का आता है, मे बी टूडेज डेटा में और क्लैरिटी आएगा व्हाट्स हैपनिंग विद द SMA-20 ग्रुप पे. और एक चीज, ये जो कमबैक हुआ है इस ओवरऑल कमबैक में, नॉट स्टिल RS का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ उतना नहीं है. सो इट्स नॉट अ वेरी ऑसम बुलिश मार्केट. स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, इट इज अ सिलेक्टिव बुल मार्केट. जैसे जैसे हम लोग वी आर नियरिंग टू द एंड पार्ट ऑफ द साइकिल, business cycle. As I said many a time, we are in a recessionary cycle, but we are getting closer and closer to the turning point, but we are not there yet. So once I there, obviously I think I'll be able to tell you, but this kind of events are immensely difficult to anticipate. But as per cycle, we are into one. So this is Nifty का overall एक idea लगा 125 minutes और ये rotation देख के. अब हम लोग इसको थोड़ा 15 मिनट्स में भी देखेंगे कि आज क्या हालत है. दैट इज ओनली द 15 मिनट्स चार्ट. आई थिंक यस, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि वेरी नियर टर्म करेक्शन फर्दर. ये करेक्शन अभी भी 125 मिनट्स में आपको दिख ही नहीं रहा है. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, आपको नोट करना होगा वहां 760.
Once 760 is cleared to the downside, that means the down move can aggravate. ये जो है important level है ये वाला, this is flat line. Next flat line आ रहा है around 650 and major flat line अगर कोई sell off heavy हुआ तो this is another one. The longer the flat line, the stronger is the resistance. So this is a very strong support. Once this is cleared, ये धीरे धीरे gradually upper charts, upper time frame charts में भी more and more prominent हो जाएंगे. और इनका जो आ रहा है यहाँ पे range, if it goes for a sell off, consolidation, little down move, then the main support, heavy support is coming around 480. So with 480 support in 125 minutes, that means testing of this flat and also breaking and reaching this level 650, where our mountain top is around 570, it can be reached. So there is a near term ek weakness hai dikh raha. But sellers beware. Sellers beware. Why? Because this sell signal, though it is becoming successful, but it gave a full exit at least. At least twice it has given an exit. Means as per my rule, the sell signal is there, theme is there that yes, you should sell. But this kind of sell, we don't get much. It is against the trend. It is, we get less, very less. Rather, you can, if you want to sell, you want to try this kind of sell with a very, very minimalistic quantity. And with this quantity, this is a major area. Though lot, maybe a Nifty you'll do. At one lot, you'll immediately look for a profit booking clearly. Or आपको exit signal फिर से buying आ रहा है, you exit the other lots. But this is a very, very, very contra play. This is a major support which will be tough for the bears. So 15 minutes, it's not really bullish, it's bearish turning. Probability buy का देखिए 14%, but एक चीज नोट कीजिएगा, sell का भी कुछ खास नहीं, 46. ज्यादा consolidation होने का चांस सबसे ज्यादा है. 125 मिनट का चार्ट में वैल्यू एट रिस्क कमी दिखा रहा है, लो वैल्यू एट रिस्क दिखा रहा है. दैट इज बिकॉज ऑफ निफ्टी का लो वोलेटिलिटी. एंड ये रेंज काफी टाइट है. आई थिंक लो वोलेटिलिटी करंटली कंटिन्यू हो सकता है, और लो वोलेटिलिटी कंटिन्यूएशन मतलब उसके अंदर जो स्टॉक स्ट्रॉन्गर है निफ्टी में वो और बढ़ेंगे. तो अब हम लोग क्या करेंगे, विल टेक अ क्विक लुक एट द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का चार्ट को देखेंगे. बैंक निफ्टी का चार्ट, लेट्स लुक एट द विद द डेली चार्ट से चालू करते हैं. और मैं ये फाउंटेन ऑफ गोल्ड के अंदर, मतलब से एसडी रेनबो वेव का जो इसके अंदर फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप इस्तेमाल कर रहा हूं. ये जो मीटर वैल्यू एट रिस्क आपको दिख रहा है, दैट विल सून बी अवेलेबल थ्रू द लर्नर्स एज वेल. Bank Nifty is rather interesting. We have a buy signal 46,223 is candle पे. So let me check. अगर candle का closing लेंगे, so around buy call जो आया है, that is 50,830 पे मान सकते हैं. So it is 100 points profit में है trade, but ये profit है नहीं. It is means it can come back lower. This is not the kind of 100 points profit इसमें हम लोग देखेंगे. We are looking, इसमें हम लोग देखेंगे बड़ा मूव, बिग मूव. बिग मूव हो भी सकता है, ना भी हो सकता है. जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस 49,700. सो जितना पास इसका जो लोग इसका खरीद पाएंगे, दैट विल बी द बेस्ट. So currently with the buy trade with 100 points in the money, what you want to do is, if you want to go for Bank Nifty, you want to go right now a bit smaller side. If it comes down, usually buying signal के बाद 50% day we get a correction and then again buying. Like this selling. After the sell signal, there are some corrections which often happen, and then of course opposite side selling. Signal is a very, very strong one. So this signal is likely to succeed, but a path कैसे move flow होगा उसके ऊपर आपका risk management करना है. Otherwise
even with the signal, without proper risk management, you may get lost and stopped out. So this is the main idea, main theme के यहाँ पे तो one warning कि this is going up, means if Bank Nifty does not go up quickly, it is going to create a flat line resistance on above. So that will be problem for the bulls. Otherwise, this is a very, very good base to start buying. जब निफ्टी गिर रहा, sorry, बैंक निफ्टी गिर रहा था, we had discussed about this level. So अभी डेली कैंडल में बाई ट्रेड का सिग्नल, बट कंसोलिडेशन का चांस 57%, 29% चांस बाई ट्रेड विन पर. वैल्यू एट रिस्क मेजर कर रहा है कि नेक्स्ट 125, मतलब अराउंड आज 125, so 11 2, so by kal 3:30 tomorrow, because 5 it is taking 5 candles, so this is measuring that if anyone takes this, now takes this means say one bank nifty, not future, not other, suppose this instrument, there is a 95% chance that your loss will be contained within 0.8%, means approximately 1% loss risk. But once again, this is a statistical measure. It does not include if President Putin suddenly fires 1,000 rockets towards Ukraine. It does not account for such things. सो बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देखें, इसके साथ देखेंगे 125 मिनट्स का चार्ट को. 125 मिनट में बैंक निफ्टी क्या बता रहा है. 125 मिनट में बैंक निफ्टी सेम वही रेंज जो हम लोग देखे, थोड़ा बुलिश ट्रेड जो मेंटेन किए थे, बुल स्प्रेड कल हम लोग ऑप्शन में बात किए थे, वही ट्रेड प्रॉफिटेबल है. ये ग्रेजुअली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, किसी ना किसी इवेंट के साथ इसमें टेस्टिंग एंड ब्रेकआउट अटेम्प्ट्स आएंगे. So 125 मिनट्स में वही दिख रहा है कि बाई सपोर्ट टुवर्ड्स द सेल रेजिस्टेंस एक रेंज में, ये बाई ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी बढ़ चुका है. सो बुल्स आर गेनिंग स्ट्रेंथ, बट अनलेस दीज लेवल्स आर टेकन आउट, big ride very unlikely. But this will also be a gradual, not a smooth ride, because a lot of resistance, 51,000, 51,120. This is 51,220. Then we have this flat line, 51,645. Then we have 51,860. Then finally this zone, 52,500. So ये सब जगह पे, even if Bank Nifty goes up, ये सब जगह पे stopovers, थोड़ा struggle, these things will be there. So it will not be a very smooth move. It will be a zigzag move. I think stocks would be better, or relatively non-direction options. Some of the option strategies could be better rather than looking for directional bets with futures. This time frame is really not great for directional bets right now. Now, Bank Nifty's intraday looks similar to Nifty, a clear bearish pressure. Similar support, strong support, that's good news. जो लोग buy करने के लिए जो हम लोग discuss किए daily players, it's a good thing. If it falls, great, let it come towards this flat line. This is a very strong line. I don't think Bank Nifty is breaking this one. It can drop towards this, but this is such a strong, यहाँ से चालू हुआ है, straight back to this, and यहाँ से भी कई सारे flat lines up to this level. So ये एक बहुत ही strong base है, 50,650 area. I don't think Bank Nifty is immediately breaking that. But this sell-off can give an opportunity to the positional trader in the daily chart that after the correction, they might get in where it will be much more better risk way, मतलब better risk position, better risk जगह पे आप होंगे Bank Nifty को long करने के लिए using the daily or positional chart. This is more of an intraday chart. It's a mixed market. Buy trade win 32, sell trade win 36%, consolidation win 43%. So broadly mixed market.
का सिचुएशन। So इसके साथ साथ once we understood this, we are going to take a look at this बैंक निफ्टी निफ्टी एंड हम लोग थोड़ा रोटेशन को देखेंगे। रोटेशन से पहले फिर से एक बार हम लोग निफ्टी 500 को देखेंगे। निफ्टी 500 is the one that we use for stocks to measure stocks. That is, it is beautiful. It is beautifully going up. But once again, gradually momentum fading. थोड़ा वो 125 minutes में और prominently दिखेगा, but broadly it has been bullish. 125 मिनट का चार्ट से आप देखेंगे जब से बाई सिग्नल आया है since 16th Friday, it has steadily moved higher. Except now we are seeing a little bit of struggle. Red caps ये देखिए, struggle over समझने के लिए अगर ये हाई को ब्रेक कर दिया, न्यू हाई बना, then means struggle will be over. But अभी भी we had previous candle red caps, तो थोड़ा struggle, correction, marginal ऐसा position चल रहा है in the swing. अब हम लोग क्या करेंगे, we'll go to the daily chart and अब हम लोग चले जाएंगे sector rotation. सेक्टर रोटेशन का जो डिटेल वीडियो, ये दिस वन मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए करता हूं, यूट्यूब मेंबर्स. सो दिस इज ओनली वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द इक्विटी रोटेशन इंडिया. इक्विटी रोटेशन में एक कॉम्पिटिटिव एसेट जो इंडिया में आप लोगों के पास है, दैट इज गोल्ड बीज. आप दूसरा कुछ करे ना करे, गोल्ड बीज डेफिनेटली हैज शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो जब 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 टाइम हो. तो अभी अगर देखा जा रहा है कि इट्स अ मिक्स कैंडल, तो ना तो निफ्टी गुड ना तो गोल्ड गुड, या तो दोनों गुड, मतलब कोई एक दूसरे को सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है निफ्टी और गोल्ड में. सो वी कैन गो फॉर आइदर चॉइस एट दिस पॉइंट. तो आइदर चॉइस डिसाइड करने के लिए हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे जो हम लोग देख चुके हैं, दैट मींस निफ्टी इज बुलिश. अब गोल्ड का चार्ट भी देखेंगे तो व्हाट्स गोल्ड इज डूइंग. सो गोल्ड में हम लोग M6 का फ्यूचर देखेंगे. गोल्ड हैज बीन बुलिश, अभी नहीं. इनफैक्ट अ फुल एग्जिट आया है गोल्ड में. ये गोल्ड में एग्जिट इज नॉट सरप्राइजिंग क्योंकि हम लोग का टारगेट रीच हो गया था. दिस इज द फ्लैट लाइन टारगेट रीच गोल्ड में. That's the beauty of this fountain of gold setup. It's a multi-asset, multi-time frame setup. Though for the best performance, I'll have to I use the commodity setup for commodities. But I can use the fountain of gold on anything because that's the mother setup. So gold futures, it's not good. So फिर से जब buying आएगा in the gold, then only we'll go into gold bull. I've exited all the gold positions. I've exited metal. हम लोग डिस्कस करके एग्जिट किए, लास्ट टू लास्ट डे क्लास था. सो उस क्लास में, बिकॉज वो मेटल एनीवे कमोडिटी में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों. सो दिस इज गोल्ड. गोल्ड में इज नॉट गुड, सो निफ्टी इज बेटर. सो निफ्टी में पोजीशन होल्ड करेंगे. सो ये रोटेशन देखने के बाद जो रोटेशन के ऊपर मैं फोकस करता हूं, दैट इज निफ्टी के अंदर का रोटेशन, दैट इज मिड कैप. मिड कैप में क्या चल रहा है? Is mid cap any good in this cycle? The answer has been yes. Mid cap थोड़ा बेहतर कर रहा है. ये रहा बाई सिग्नल. ओवरऑल रिमेन्स ग्रीन, बैकग्राउंड ग्रीन. सो मेजोरिटी मिड कैप में अच्छा किया. व्हाट अबाउट स्मॉल कैप? स्मॉल कैप पहले अच्छा नहीं किया था, बट वी सॉ द ब्यूटीफुल कमबैक ऑफ स्मॉल कैप्स इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस. देखिए रिलेटिव परफॉर्मेंस के हिसाब से स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस किया है ओवर द लास्ट 5 days. तो स्मॉल कैप का अगर कोई CNX स्मॉल कैप, सो ओवरऑल पास्ट 5 days से ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ बाइंग जो हो रहा था, उसमें स्मॉल कैप हैज मेड अ गुड कमबैक. बट प्रीवियसली देखिएगा इट वाज स्ट्रगलिंग. तो रोटेशन रेशियो से मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि यही दिस इज क्या चल रहा है, कब से क्या, किस सेक्टर में किस में जाना है. नाउ मैं देखूंगा कि ओवरऑल दिख रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप आउट परफॉर्मेंस, मतलब रिस्क के तरफ ही है मार्केट. बट रिस्क को और बेहतर समझने के लिए हम लोग निफ्टी टू निफ्टी 100 का रेशियो देखेंगे.
देखिए पहले स्ट्रगल था, निफ्टी एक रेंज में था और हम लोग देखे थे कि ये रेशियो जो है वो रेंज में है, बट अभी देखिए कितना स्टेडीली ब्यूटीफुली नीचे जा रहा है विद अ फुल, दैट मींस रोटेशन रिस्क के तरफ ही। So even if we are seeing correction in phases, I am not seeing a run away from risk or any kind of aversion, rather risky bets लिए जा रहे हैं। तो इसको और समझने के लिए, कंफर्म होने के लिए, दिस रेशियो आई यूज, दैट इज द 200-500 रेशियो। 200-500 रेशियो में क्लियरली नीचे की तरफ जा रहा है। इट इज दैट मीन्स रोटेशन यहां पे थोड़ा अलग हो रहा है। रोटेशन निफ्टी 200 जो है 200 क्लियरली गोइंग डाउन कंपेयर टू निफ्टी 500, दैट इज दो ब्रॉड मार्केट में आज क्या हम लोग देखे, करेक्शन फुल रेट, बट इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो यस रिस्क के तरफ ही अभी भी चल रहा है। इट्स नॉट वेरी एग्रेसिव लाइक दिस, इट वाज द एग्रेसिव, बट दिस इज अ रोटेशन टुवर्ड्स रिस्क। ये जो फेज है, इस फेज में रोटेशन हो रहा है। डोंट बी एग्रेसिव, टेक यूर टाइम इन दिस फेज एंड फाइंड द जिम स्टॉक्स ऑफ दिस फेज, जिम सेक्टर्स ऑफ दिस फेज। वैसे कौन सा सेक्टर्स जो है वो हम लोग डिटेल एसेट एलोकेशन वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज अबाउट निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी रोटेशन। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू put a like on the video. Thank you so much for watching my videos. All the best from my side, and as always, happy trading.